जंप हो जाता है तो आप कभी कभार म्यूट हो जाते हो. What we want to do is, our mission is very clear. First of all, we want to take care of segment 1 till 99 in everything learning. Online, one-to-one, traditional, everything that is possible. Second is, we want to keep you relevant. आज से कुछ साल पहले जब स्मार्टफोन आया और हमने 4-5 साल पहले मेरे दादाजी को दिया, तो कहीं ना कहीं मेरे दादाजी की रेलेवेंस इन लाइफ आउट ऑफ डेट हो गई. जैसे आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, वैसे ही आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है that you keep up with what is going on. Otherwise, you lose track, you lose confidence, and things do not turn out the correct way. How many of you agree with me? Please write agree. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Mr. Prakash. Thank you, thank you, thank you. There is a fundamental problem with what we're doing. The problem is we live our life as if someone will take care of it. And we are not, and this is my favorite line, we are not makers of our own destiny. Problem is no one taught us. We were busy learning algebra. We were busy learning square root, but no one taught us how you have to plan your life, how you have to live your life. Why a goal-oriented life is not the correct life. लोगों को सिखाया जाता है गोल ओरिएंटेड हो जाओ. जब तक अपने गोल पे पहुंचते हैं तब तक उनका गोल बदल चुका होता है. आज से 4 साल पहले तक मर्सिडीज चाहिए थी, मर्सिडीज के पीछे भागे. अगले साल चाचा जी को स्ट्रोक हो गया तो समझ आ गया अब हेल्थ चाहिए. So there is a certain way that you have to live your life, and that is what we want to do here. So the first thing of keeping you relevant is, first of all, I'm not saying you should not have goals. You should have goals, but there is a certain way to achieve them. So point number 1 is your goals should decide your education. आज की दुनिया में क्या हो रहा है, बच्चा कहता है 12वीं करी, 12वीं के बाद साइंस ली, साइंस अच्छी लग रही थी, उसके बाद जेईई मेंस का पेपर दे दिया, फिर बच्चा आईआईटी क्रैक करने गया, आईआईटी क्रैक नहीं, फिर बच्चा जो है इंजीनियरिंग कर लेता है, इंजीनियरिंग करके उसके मार्क्स आते हैं, फिर जब वो मार्क्स आते हैं उस हिसाब से कहता है अब मेरे को देखते हैं कौन सी कंपनी रख लेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू बैक ट्रैक. अगर मैं नोएडा रहता हूं और मेरे को गुड़गांव जाना है, तो मैं पहले प्लान बनाऊंगा कि मेरे को गुड़गांव जाना है, 1.5 घंटा लगेगा, 40 मिनट मेरे उठने के, 20 मिनट ब्रेकफास्ट के, 10 मिनट फ्रेश होने के, 10 मिनट घर वालों से मिलने के लिए, 1.5 घंटे का रास्ता. वी वांट टू बैक ट्रैक. So whatever your goal is, you should be taking an action according to that. But I'm still not talking about being goal oriented. Second is your goal should be specific, not special. Now this is where the science comes in. Problem क्या होती है, as depicted by virus in 3 Idiots. उसने बच्चे का पहले ही फ्यूचर डिसाइड कर रखा था, तो डॉक्टर बनेगा, तो इंजीनियर बनेगा, तो ये बनेगा. प्रॉब्लम वहां पे एक आ जाती है. एंड हुआ क्या, पहले लोगों ने ये करा, फिर सरकार ने आके बोला, टीचर्स ने आके बोला प्लीज डू नॉट प्रेशराइज योर चाइल्ड टू डू एनीथिंग. एंड फिर माँ बाप ने प्रेशराइज करना छोड़ दिया. हुआ क्या, ना योर चाइल्ड इज रनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन. ही इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, व्हिच इज नॉट द करेक्ट वे टू गो फॉरवर्ड. थर्ड थिंग इज योर स्टेप्स शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट गोल ओरिएंटेड. अब मैंने पहले 2 पॉइंट्स अपने काउंटर कर दिए. What does this mean? This means that there should be a certain level of excellence. I'm not saying aim for a Mercedes, but if you are following the correct process, the day you want, you can buy one. Mercedes should not be the driving factor in your life. That financial wealth should be the driving factor in your life, and that process that you have to follow should be the driving factor of your life. How many of you understand? Please write, I understand. Come on, guys. Don't leave me nervous over here. Come on. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Rohit Jadhav, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Now, for people who want me to proceed further, please write, let's get relevant. I hope all of you are parents and none of you are students, because this session is not for students and not for students who are weak-hearted, because the next part could be a little bit depressing. So if your children are around, please send them somewhere else. This is only for parents. After this, so what is important?
Saurabh, please request that again. So what is important is that there is a mismatch in your life. What that mismatch is, do you see this resume? It's made as a triangle. And do you see that job? It's made as a circle. The eventual process of nursery, KG, preschool, school, college is to get a job or to start a business. The problem is what we've been taught, there is a complete mismatch. For this business alone, we hired 15 telecallers. एंड उन लोगों को ना कॉलेज में शायद किसी ने फोन पे बात करना सिखाया, ना स्कूल में किसी ने फोन पे बात करना सिखाया. उन्हें सिखा दिया कि कैंटिलीवर क्या होता है. So now what they are facing, what they are doing is something that they did not learn. So do you agree with the mismatch? So the problem with that is what we learn we could never apply. What we apply today we never learned. Third problem is nobody has a solution to this. How many of you agree? Please write agree. Thank you. I'm going to be a little bit impolite and I'm going to drink straight from the jug. Sorry. So let's ask ourselves, should my child continue school or college now because it is irrelevant? What should be the deciding factor for his education if not his passion? Is there a solution to this problem? When I plan his future, what is important? How will he know better when I myself don't? How will I guide my child when I myself don't? Saurabh, could you please shut off this annotations feature? And what is the next step? So people, please get a pen and a paper. The depression starts. We are now going to do an exercise. So how many of you guys agree that your children are your assets? Please write assets. How many of you agree that your children are your assets? Please write assets. And whatever investment you make in them is something that you're only making to grow your asset. Now, step one, which is depressing, is going to be, we are going to see how much investment are we going to make in this asset. And you'll see a whole other dimension of education that you've never seen before. Is my screen visible? Saurabh, is my screen visible? Just yes, it is visible. Got it. I hope you guys have a pen and paper now. So 15 years of school, which is pre-nursery, KG and all of that stuff till 12th. And I'm assuming 4 years of college and then maybe 1 year of preparation. So I'm assuming you're middle class people, you have okay amount of money and you're making your children study in schools like DAV, NGD, Goenka and DPS. And the tracking that we've done, we've made on the nominal basis. So 15 साल, एक साल की फीस कितनी होगी? 30,000 into 15, 4.5 लाख. ये एवरेज है, हो सकता है 12वीं की ज्यादा हो सकता है नर्सरी की कम हो. कॉलेज चाहते ना चाहते हुए एक साल की फीस 1.5 लाख रुपए इंटू 4, 6 लाख. कोचिंग अगर बच्चे ने IIT या फिर क्लैट या फिर ये सब लिया तो 30,000 रुपए साल का, 2 साल अज्यूम कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन चिल्ड्रन, 60,000 रुपए ये हो गया. 1,80,000 रुपए अगर आपका बच्चा अज्यूमिंग वो 15,000 रुपए पर मंथ खर्चता है जब वो कॉलेज में जाए और इंटू 12 वो कर ले तो 1,80,000 रुपए उसका साल का खर्चा हो गया इंटू 4 साल, विच इज 7,20,000 रुपए. फन एक्टिविटीज, आपका बच्चा जब कॉलेज में गया है वो बोलेगा पापा मूवी देखनी है, वो बोलेगा पापा घूमने जाना है, वो बोलेगा पापा मेरे दोस्त गोवा जा रहे हैं, मेरे को जाना है. तो साल का मैं मिनिमम 20,000 रुपए अज्यूम कर लेता हूँ और 5 साल का 1 लाख रुपए हो गया. ट्यूशंस, आपका बच्चा 8 से लेकर 12 तक अज्यूम करते ट्यूशंस पढ़ना चालू करता है. एंड
पर मंथ उसका ट्यूशन 1500 रुपए हो गया, साल का 20,000 हो गया, 2 ट्यूशन ले रहा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इनटू 5 साल 1,00,000 रुपए, इनटू 90,000 हो गया, सॉरी। एक्सेसरीज, बुक्स, क्लोथ्स, डिवाइसेस, एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, हर साल का 60,000 रुपए, साल के एंड में 7,00,000 रुपए। All of this nonsense comes down to 34 lakh rupees on an average. 34 lakh rupees that you would have spent on your child in 19 years of education. How many of you find this number a little bit shocking? Please write shocking. $34 lakh, 30 lakh रुपए आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे। Now parents, I know parents who spend 16 lakh rupees a year also. I know parents who can take this number up to, अच्छा suppose सिर्फ 90,000 रुपए साल की फीस है, which is also possible. This become 43 lakh rupees. अगर लिविंग एक्सपेंसेस बच्चे के पर मंथ 25,000 रुपए हैं, this becomes 50. अगर बच्चा जो है फन एक्टिविटीज साल के पापा से बोलता है पापा 40,000 रुपए, this becomes 48. अगर बच्चा डे टू डे एक्सपेंसेस, दिस इज आई हैव टेकन 100 रुपीज अ डे, 50 रुपीज ट्रैवल, 50 रुपीज फूड। जब जो मेरा भी भाई एमिटी कॉलेज में पढ़ता है, वो 500 रुपए पेट्रोल का लेता है, 500 रुपए खाने का लेता है। तो अगर मैं उस फैक्टर के हिसाब से ले लूं तो दिस नंबर विल अगेन गो। सो दिस कैन स्टार्ट फ्रॉम 30 लाख रुपीज एंड दिस कैन गो अप टू 1 crore. Very easy. Do you want me to depress you a little more? Please write yes. Because right now this is a reality check. Depression is going to start. Prakash Soni wants to be depressed. Varun Chandak wants to be depressed. Don't worry. Rohit Jadhav wants to be depressed. Don't worry. Do not leave the session midway, because you will be leaving with half a problem and a zero solution. Now let's assume मार्केट के हिसाब से जनरल सैलरी स्टैट्स अज्यूम करते हैं, और मैं आपको वन ऑफ माय कंपनीज का बता देता हूँ। जो 10 टेलीकॉलर्स मैंने हायर करे हैं, देयर सैलरीज रेंजिंग फ्रॉम 12,000 रुपए टू 30,000 रुपए, और वो ये 30 लाख वाली सेगमेंट के बच्चे हैं। बीटेक करा हुआ है, ओपन से कुछ भी करा हुआ है, एक डिप्लोमा भी करा हुआ है। द स्टार्टिंग सैलरी दैट आई ऑफर इन माय कंपनी is 9,500 rupees. So let's assume for the benefit of doubt कि बच्चा 4 साल कॉलेज करता है, उसके बाद उसकी सैलरी अच्छी लग जाती है, अच्छी हो गया 19,500, and assuming 7% increment per annum, which is actually not the case anymore, because of COVID, market has gone back 10 years at least. So this could be even 0% increment for next 3 to 4 years. And then 7% increment. So let's assume this. आपका बेटा समझदार है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, और अच्छा फॉर डिस्कशन से लेट मी टेक 14,000 रुपीज, सो यू गेट द इम्पैक्ट ऑफ दिस, जस्ट फॉर डिस्कशन से। 14,000 रुपए आपके बच्चे की सैलरी चालू होती है। कोई भी इंजीनियर कोई भी बीबीए का बच्चा, उसकी 14,000 से ऊपर कहीं नहीं मिलती है अगर वो किसी कंपनी में जाके आज नौकरी करना चालू करता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? प्लीज राइट एग्री. And if you want to write your own first salary, you can even write that. So we have some precedent. Right. Thank you. आपका बच्चा सब assume करते हैं अभी 10th में है, 10th, 11th, 12th, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और एक 5वां साल हमें और दे देते हैं। 2020 हो रही है, ये हो गए 8 साल। अज्यूम करते हैं 2028 में आपका बच्चा, चलो समझदार है, थोड़ा और बड़ा है, 2027 से चालू कर लेते हैं। अगर 2027 से वो 14,000 की सैलरी से चालू करेगा तो 20 साल बाद उसकी सैलरी 50,000 रुपए होगी, जब पेट्रोल का रेट 180-190 रुपए होगा लीटर। जब मुंबई में 1 BHK अपार्टमेंट जो होगा वो 1 लाख रुपए का होगा। जो शायद अभी भी है।
Are you guys okay with this? Should I continue further? Please write continue further. Or no, please write salary sucks. More depression. This is your child's average salary from now on. 20 साल की जो एवरेज सैलरी है आपके बच्चे की, इसका टोटल सम करके मैंने डिवाइडेड बाय 20 कर लिया। आई एम अज्यूमिंग ये उसकी सैलरी है। अब हम चलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शीट। आपका बच्चा आपका एसेट था, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करी। एसेट में इन्वेस्ट करोगे तो एक छोटी सी बात होती है जिसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको वो दिखाऊंगा। अब आएगा डिप्रेशन। सॉरी, आपका बच्चा 28,000 की सैलरी लेता है पर मंथ, ठीक है, एंड बड़ा अच्छा बच्चा है और आपके साथ रह रहा है। और अच्छी बात ये है क्योंकि वो आपका बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा आपके साथ रह रहा है, तो उसको रेंट नहीं देना। ओके, शादी के बाद उसने कहा पापा आपके साथ ही रहूंगा, दुनिया बड़ी बुरी है। अज्यूम करते हैं आपका बच्चा जो है 20 साल में जब नौकरी कर लेगा तो पापा बोलेगा बाइक चाहिए, अगर उसने कॉलेज में नहीं ली, या बोलेगा पापा गाड़ी चाहिए। एक गाड़ी की किस्त, 5 लाख की गाड़ी की किस्त, 7 साल की किस्त कितनी होती है पर मंथ? एनीवन? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। आई डू नॉट हैव एनी EMIs, सो आई डोंट नो। प्लीज हेल्प मी। गाड़ी की किस्त कितनी होती है? 5,000 रुपये। रोहित जी, यार आईफोन की तो 7,000 की होती है बट चलो लेट्स अज्यूम 5,000 रुपये। लड़के ने बोला कि पापा मेरे को गाड़ी लेनी। आपने कहा बेटा ले ले, अब तो तू कमाता है। अज्यूम करते जो बच्चा है वो कोई और इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है एक जॉब के साथ दूसरी जॉब पैरेलली करना। अगर बहुत ज्यादा इजी जॉब है, इफ यू आर अ टीचर, आई एम नॉट, so I do not mean teacher job is easy, but there is a substantial amount of time। शाम के आप 2 घंटे ट्यूशन ले सकते हो। जनरली हर जॉब में नहीं होता, 9 to 6 वाली होती है तो बंदा फंस जाता है। तो अदर इनकम अज्यूम कर लेते जीरो है फॉर डिस्कशन से। अगर 5 लाख की EMI है तो उसकी 5 लाख की किस्त भी होगी, करेक्ट? एडिशनल जॉब नॉट पॉसिबल। थैंक यू रोहित यादव जी। अब बात करते हैं, वो आपके साथ रह रहा है तो आप अब 20 साल की बात हो गई है, बेटा आपका अभी 22 का है और जो उसके पिताजी हैं वो 45 के हैं। 20 साल बाद पिताजी 75 के होंगे, बेटा होगा 42 का। तो उस टाइम पे 60% पेरेंट्स की कोई एडिशनल इनकम नहीं होती। थोड़ी बहुत एक FDI करा लेते हैं एंड थोड़ा बहुत काम और कर लेते हैं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता। तो अज्यूम करते हैं बेटा घर का खर्चा संभाल रहा है, मेड, फूड, ट्रैवल, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दी एसेंशियल एक्सपेंसेस। 4 बंदे घर में रहते हो, 17,000 रुपए कहीं नहीं गए, करेक्ट? इफ यू एग्री विद मी प्लीज राइट एग्री। अच्छा, आपके बेटे को, क्योंकि अब वो मेरी शरण में आ गया है और मैं चाहता हूं कि वो अपनी 99 तक मेरे साथ एजुकेशन कर ले, या फिर इस सेशन के बाद अपने बेटे को समझाता हूं कि बेटा ये 2 फंड क्रिएट कर ले। इन फंड का पर्पस क्या है कि तेरा पैसा कुछ साइड में रहेगा। तो एक उसने कैश फंड क्रिएट करा विच इज कॉल्ड अ कैश रिजर्व। थिंक ऑफ इट एज एन SIP। हर महीने 5% ऑफ सैलरी वो एक SIP में डालता है। 5% पैसा यहाँ चले गया। और एक उसने फंड और क्रिएट कर लिया जिसको मैं बोलता हूँ LTSS, लॉन्ग टर्म्स सेविंग फॉर स्पेंडिंग। शादी करनी है, घर लेना है, बच्चे की एजुकेशन, और अगर फैमिली में हार्ट अटैक होते हैं तो पापा की बायोप्सी सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो एक 5% हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा आप एक 5% ना यहाँ पे भी कर लो। यू जस्ट नेवर नो व्हेन थिंग्स माइट मूव। बच्चा कहता है कि यार मेरे को ना पापा 2,000 रुपए ना अपने ऊपर भी पर मंथ खर्चने हैं। मूवी देखने जाएगा, पार्टी करेगा, ट्रैवल करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। सो लेट्स अज्यूम 2,000 रुपीज। इस 2,000 रुपीज नॉमिनल अमाउंट एक बच्चा, एक इंसान अपने ऊपर खर्चता ही है। इफ यू आर अ स्मोकर देन यू आर स्पेंडिंग 2,000 रुपीज इजीली, करेक्ट? Should I write it or should I not write it? I need an answer, boys. Yes or no?
Depression. Mr. Chandel, please mute yourself. अगर आपका बच्चा ऑन एन एवरेज 28,000 रुपए कमाता है, उसकी 5,000 की किस्त है, 5 लाख की डेट है, एसेंशियल एक्सपेंसेस 17,000 रुपए, 5% साइड में डाल रहा है, लेजर एक्सपेंसेस 2,000 रुपए पर मंथ है, तो उसका नेट मनी अर्नड एवरी मंथ इज 1,800 रुपए। अगर उसका इतना ही अमाउंट है, तो जो आपने एज गुड पेरेंट्स उसकी पढ़ाई लिखाई पे खर्चा था, एंड आई एम टेकिंग दिस अमाउंट, तो वो 156 ईयर्स में रिकवर होगा। 150 साल, 3 पीढ़ियां। हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड दिस माइंड ब्लोइंग? राइट, माइंड ब्लोइंग। Much horrible. Yeah, someone please keep your mic on mute. I lose my flow. यार मैं 9 to 9 काम कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, मेरे पिताजी ने भी खूब सारे पैसे खर्च दिए थे, मैं वो रिकवर कर रहा हूँ। Mr. Anshul Kapoor, this is not a question of money. This is a question of target now. Mr. Sahu, guys, please keep yourself on mute. Saurabh, please make me the host. Saurabh, please make me the host. And if someone is misbehaving, please make them exit the room. Now, how many of you want to improve this? Please write, I want. तो मैंने उसको बोले उसका जो टेंडर का 2 गाड़ी है। Saurabh, are you unable to get Sahu out of the room? Guys, just a second. This nuisance doesn't work well. How many of you are able to see my screen? Now, how do we improve this? Does anyone have a solution? Please write, I have a solution, and tell me the solution. Nobody? If you want a solution, please write, please bata do. I want you to ask for it. Very nice. Prakash ji wants to know. Foreign jobs is the only situation solution. नहीं सर, क्या बात कर रहे हो? इंडिया में खूब पैसा मिल रहा है, संन्यास। सर भीख मांग, जो सन्यासी होते हैं ना, उन्हें भीख मांगनी पड़ती है। भीख मांगना is one of the toughest things to do. संन्यास is not a solution. संन्यास is a way of living. चलो सर, मैं बता देता हूँ। मैथ्स है, सिंपल सोल्यूशन है, इनकम बढ़ा लो। इनकम कैसे बढ़ाओगे? How many of you get the logic in increasing the income? Please write, I do.
बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, सिर्फ प्लानिंग चेंज करनी है, चीजें दिखने लगेंगी। टैक्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर ओके। टैक्स, अगर टैक्स ही एक इशू है तो इनकम क्यों बढ़ानी? नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द एक्शन प्लान। वी वांट एटलीस्ट, नाउ आप लोगों का पहला आइडिया क्या था? मेरा बेटा कितने की नौकरी करेगा? मेरा बेटा गलगोटिया कॉलेज जाएगा, वहां से बीटेक करेगा, करते कराते हुए पास हो जाएगा, फिर वो देखेगा उसके मार्क्स कैसे आएंगे, फिर कॉलेज वाले उसकी प्लेसमेंट करा देंगे और उसको 4 महीने में लोग निकाल देंगे। नहीं, और दिस इज नॉट फॉर, एंड यू डोंट हैव टू डिसाइड योर चाइल्ड्स फ्यूचर, you just have to make it very clear. You have to make yourself very clear that this is what your child will do. Now let us aim a little higher. Let's assume आपके बच्चे की पहली नौकरी 75,000 से लग रही है, तो 2050 में आपका बच्चा जो है वो 2,70,000 रुपए कमाएगा। प्लीज राइट ऑसम। मैं बताऊंगा कैसे लगेगी, डोंट वरी। उसकी एवरेज इनकम 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। सॉरी, अगर आप इस शीट में अपनी एवरेज इनकम बढ़ा दो तो आपका आरओआई 2 साल में वापस आ जाएगी। प्लीज राइट अमेजिंग। अब क्या करना पड़ेगा अमेजिंग होने के लिए? नाम बदल लो, विजय माल्या रख लो। नहीं, जस्ट जोक। Whatever you have done in your life till now, whatever your child in his life has done till now was leading to this number. Whatever your child has done till now, whatever he has done till now was leading to this number. No, you don't have to learn something which will give you a salary. No, that is not, that is one step, but it does not work that way. You don't know where you are going. So first of all, please write the name of your child on a piece of paper. Please write the name of your child on a piece of paper. Please write graduation, post graduation salary. Write 1 lakh rupees. I want everyone to write 1 lakh rupees. अगर 14,000 ही कर रहा था और 14,000 ही करेगा और गलती से 1 लाख रुपए लिख भी लिया तो क्या बुरा है? लाख रुपए लिखो। सर हु इज विजय माल्या? इग्नोर। लाख रुपए लिखोगे, आपका बच्चा जो है 2050 में 3,60,000 रुपए कमा रहा होगा। लाख रुपए लिखो। लाख रुपए अगर आपका इतने पैसे कमा रहा होगा तो आपका बच्चा 2 साल में सारा पैसा वापस ले आएगा। अब ये करना कैसे है? इट्स वेरी सिंपल। यू फर्स्ट सी हु इज पेइंग दैट काइंड ऑफ मनी। आपको पैसे कौन देता है? कंपनी देती है या खुद देते हो खुद को? भिखारी से जाके मांगोगे तो भीख मिलेगी। Which company is paying this kind of money? Fortune 500. Align your child. Tell him you don't have to be an engineer. I want you to work in that company. Be a chapadasi and earn 1 lakh rupees. So align his future. Give him 2 things today. Son, your graduation salary should be 1 lakh rupees. Post-graduation salary. For that, I will tell you the action steps. Then you have to work in certain companies. अगर टारगेट सैलरी ये है तो इनमें से किसी कंपनीज में काम करना पड़ेगा।
अगर टारगेट सैलरी ये है तो जाओ ना एक एमएसएमई में जाओ, 14,000 वाली कंपनी में काम करो। जो बंदा खुद 4 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है, तुम्हें लाख रुपए देगा? सो फर्स्ट अलाइन योर चाइल्ड्स विजन with where he wants to work. You found someone with money. Now you need to see why they will pay you. Step 1 is find someone with money. Do you want me to go to step 2? Let's assume your child is going to work in Google. Please write what your child is doing right now in the question chat box so I can know what exactly they're doing. Please write which class, which college, which grade, whatever he's doing. 10th, 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 10th के काफी सारे 10th, 10th क्या हो गया? लॉकडाउन के तरह पूरा इफेक्ट आया, सारे 10th में अटक गए। Not an issue. So if they're in 10th, very good, because my plan will start from 10th. We are all in 10th. आप श्री गुप्ता जी, आप मदर हो या डॉटर हो? 10th and 2nd. Got it. Now, why will Google pay you money? Why will Google hire you? Now that when it is clear that you want to work with Fortune 500 companies so that you make some money, you have to see what they want. The best part is a Fortune 500 company is dipping their ink in everything. टाटास के बारे जानते हो? क्या नहीं करते? टीसीएस इकलौती कंपनी है जिसने इस साल आईटी इंडस्ट्री में अप्रेजल अनाउंस कर दिया था। सारे आईटी वाले इधर उधर भाग रहे हैं अब टीसीएस की तरफ। गूगल इकलौती कंपनी है जिसने 35,000 रुपए अपने सारे एम्प्लॉइज को दिए थे फर्नीचर खरीदने के लिए वर्क फ्रॉम होम में। मेरे दोस्त की कंपनी है, उसने 70% स्टाफ लॉकडाउन में निकाल दिया था, सर्वाइव नहीं कर रहा था। So who do you want to you want your children to work with the giants or with MSMEs? Please write giants for those who want your children to work with the giants. Not joint, joint is something else. Now why will a giant hire you? You have to match them. What are we going to do? Please write. It's very simple. You have to give them what they want and they will run after you like crazy. It's very simple. Just a second, I need to change my screen. You need to match this and you need to match this. But आप क्या कर रहे हो? बेटा तू पहले ये कर ले फिर ये देख लियो। You need to match this and you need to match this. How many of you think this was so simple? Please write, this was so simple. So simple. Please write, so simple. Are people still in the waiting room? For people being admitted now, I would suggest that you guys please talk to Saurabh. He's the moderator. Saurabh, please put your number. You guys have missed most of it. Guys, please, the people who have joined now, please tell them how was the session. And I still have not given the solution. So simple, right? So simple. Yet you guys did not see it yourself. Yet you guys did not even have the awareness to tell it to your children. So what I'm going to do now, if I leave this session right now, do you think you guys can shape the future of your children? Is it possible?
Yes or no? My answer is no. If you could not do it with yourselves, with the skill set that you have right now, you will never be able to take them there. Problem is, हमने अपनी जिंदगी में ये गलतियां कर दी हैं. Don't leave. हमने अपनी जिंदगी में ये गलतियां कर दी हैं और हम जो बेवकूफियां कर रहे हैं हमारे बच्चे भी यही करेंगे. मेरा जो दिल से लगा हुआ मिशन और विजन है ना, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ. व्हाट आई वांट एक्चुअली, मैं चाहता हूँ मेरी जैसी ना, देयर शुड बी अ फ्यू हंड्रेड मोर, a billion more copies in the market. I'll tell you a little bit about myself. Saurabh, match that part up. Just a second, let me just stop sharing. I'll tell you a little bit about myself. I started, I got into the business. I was an average student, and the education, the life that I have lived is very unorthodox. आप लोग नहीं हिम्मत करोगे अपने बच्चों के साथ वो करने का. Till 11th, 12th, मैं party boy था. I enjoyed my life, did all that I could have. In 12th, I suddenly shifted. उसके बाद मैंने 12th के बाद कॉलेज नहीं करा, ऑफिशियल कॉलेज. I've nearly spent around 25 to 30 lakh rupees in the last 2 years educating myself. What that has led to, 19, I joined my business. I was in the next 1.5 year, my father's business was at 16 crores. It leaped to 32 crores. By the time I had touched 21, I had written the first book on the industry that I catered to. Now I am successfully looking over 3 businesses. I have taken a session of 26 people who are much more elder to me, much more experienced than me, and yet they could not see what I am seeing. What do you guys guess is my age right now? Please comment in the section. तीस 35 का तो लगता ही हूँ. The worst I've got is 40. I'm 22. 50. Spandan Mende. I don't know. Where are you from? I want to create a couple of 100 of me's. And yes, my father is there. The company support is there. It's a bigger group. But that is my mission. Otherwise, I was very happy with what I was. Mr. Sahu, please stay on mute. Mr. Sahu, please don't unmute yourself. Now, what do we want to do next? Now I'm sharing my vision. What I want from you is give your child to me for the next 10 to 15 years. And I'll make sure that he gets to a place where he becomes something awesome. And I will not charge you anything. I'll charge you 1,999 for 1 year. Rest, everything what I'll ask him to do will be your cost. So how many of you find 1,999 is a very basic amount? Please write basic. I will not be charging you anything extra. Every education material will be on you. 1,999, 2,000 रुपए. छोटा अमाउंट है. इतना तो वो 28,000 के बाद 2,000 रुपए महीने पे खुद पे खर्च रहा था. चार ही लोगों को लगता है. What we are going to craft is, what I've done is, this is going to be the first pilot batch, and we are going to we're going to pick up 150 students that will be mentored under me. And my objective is that once they're done, they can aim for that salary. The next part of this webinar is very plain, simple. I'm not asking for the 1,999 right now.
I have told you this is how much you're spending. With the current way he is going, this is how much he'll be earning. In that way, he'll maybe get it back in this year, maybe he'll get it back in 159 years. What I've done is I've seen what Facebook, what Google, what all these companies want. And I'm here to make sure that your child gets into one of those companies. Ma'am, a child does not need talent, he needs nurturance. All the talent I got was acquired. Baki to mera DNA tha. So what I want you guys to do next is very simple. Tomorrow is Sunday. My team will be doing a one-to-one webinar with all of you. We will assess the child on many parameters and we'll craft out a plan for him. A plan only for his 10th class. For most of you are in 10th. We'll talk about first increasing the scope of his 12th. So to get a good job, what is the practical thing that everyone needs to do? You first need to find a company. You need to get the correct degree. You need to score this. Before this, you need to go to the correct college. If you're going to a bad college, they will not come hire you. For that to happen, you need to improve your 10th, 11th. In 12th, you have to score at least 90 plus because this category of students crack all these tests. And then we will be aiming for the college. So now what I want you guys to do is my request to you. Do this for me. Book a one-to-one child analysis session. This will only be 49 rupees. I want you to scan this QR code and pay this. Once this session is done, tomorrow is a Sunday, my team will contact you. For all those who paid the payment, please write, I have done it in the group. They will assess your child first. And from there, we will start strengthening him. We need to backtrack the future of your children. And this is only going to be a batch of 150 students. And I'm only going to charge you 1,999 for the year. Please make a payment of 49 rupees. I will only be taking 10 sessions, 10 bookings. 10 bookings possible, not more than 10. So people who are making the payment, shoot right now. And who've done it. And if you cannot spare 49 rupees, then please leave because you're sparing 34 lakh rupees. So people who are interested, please write interested, make the payment. And now I'll be open to questions. Yeah, Sood Saab kahan pe hai? Mr. Sood, I'll be unmuting you. Please talk to me now. He's left. Sahu. हाँ ये रे. Please make the payment. 49 rupees is what I'm asking for, guys. इतना तो आप नेट का रिचार्ज करा लेते हो हर हफ्ते. Mr. SD Sahu, please, if you now want to ask a question, ask. Saurabh? Saurabh? Oh, sorry, just let me unmute you. Saurabh? Yes. लोगों ने please write your number, put your number there so people can contact you. Sure. And show the code. Just a second, ma'am. Just a second. This is the code. At 49 rupees, your child will be assessed. You will know where he stands in life.
please do this quickly because I need to see. You can reach me at 999 show code. Just lean. And guys, please start giving me feedback for the session. How many of you liked it? Please write I liked it. Bank account and IFSC. Sir, 49 rupees bank account. Saurabh, give them the bank account details. Please contact Saurabh, sir. Fantastic. Thank you. I liked code. Okay, sir. Sir, it is very interesting. Thank you. This pilot batch will be of 150 students. I will look after them personally. And after this, whatever students are onboarding, I will not be looking after them. And Saurabh, I think if there are any questions, please unmute yourself so I can talk to you. For the people who have stayed, anyone has any questions? Cool. What I want you guys to do now is go search Picano group, go search Samyak Pathak, go read up about me. If you want my book, you'll have to pay me 999. And let's see which way the wind blows. Take care, guys. Take care. Bye-bye. Saurabh, I'll be leaving now. Please take care. Sure.